Okay, so we will start. So, what we have studied in the last class, Sana? Can you explain some of them? Non-core Non-chordata, not feature of animal kingdoms. So, I Yes, have, ma'am. yes, previously also I have told you that whatever characteristics we are studying, we will follow that characteristic or those characteristics for studying any phylum. So, what were the main bases of classification? There were 7 or 8 main bases of classification. And what were those? Specialization, appendages, digestive These system, are physiology. Apart from physiology, before that, basis of classification. These are physiology, like level of organization, germ layer, notochord, segmentation, and symmetry, body planning. All these things were what used for basis of classification. Firstly, and then we came through that physiology. Now, with respect to the physiology and this basis characteristic, main characteristic which are used for basis of classification also, each of these terms we will use for studying each and every phylum. Okay, so starting with the phylum Porifera, we will use what? Their habit and habitat, their level of organization, what are their germ layers, what are their body walls, and is segmentation present, is notochord present. We will study for this kingdom phylum. Okay, so shall we start with the discussion? The first characteristic means what are their habit and habitats. See, Porifera name, ये where from where this Porifera name has been originated. So Porifera name कहाँ से आया? Because of their organisms bodies. मीन्स की बॉडी के ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी को ही देख के उन क्या नाम पड़ा Porifera. Means they are pore bearing animals. See, in each and every figure you can see they are having numerous pores, small, large pores. You can see every kind of pores in their body. So they are pore bearing animals, and that is why named as Porifera. Pore bearing, and that is why named as what? Porifera. Okay, so अब next time कभी भी कोई पूछे कि Porifera का नाम कैसे पड़ा, तो pore bearing है इसलिए Porifera. Next is habit and habitat where these Porifera can be found. So earlier जितने भी organism हैं in the from evolution point of view, if we see together, so primitive animals are formed from water. So they will always be found in aquatic areas, or we can say always will be seen in water areas. So all are aquatic. Habit and habitat, all are aquatic. Okay. Now aquatic water is what? Two kinds. One will be what? Marine. Other is what? Fresh water. मरीन मतलब क्या कि जो ये ओशन वगैरह का पानी रहता है दैट इज व्हाट मरीन एंड फ्रेश वाटर विल इंक्लूड रिवर्स एंड पॉन्ड्स वाटर ओके ओशियन एंड यहाँ पे रिवर्स लेक्स एक्सेट्रा सो ऑल of the organism of Porifera will be found in aquatic environment and mostly will be found in marine and some will found in fresh water. Okay, now next is in this point only they are sessile. Sessile का मतलब what is the meaning of sessile, Sana? Okay, so sessile means fixed at one position. Means कि उनका position एक जगह पे fix है. They are not able to move. Animals का basic characteristic क्या है कि वो locomotion and movement करते हैं. बट ये जो पोरीफेरा है ये हाईली प्रिमिटिव है. ये किसी ट्विग से, किसी रॉक से, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहेगा, बट इट विल नॉट हैव द एबिलिटी टू मूव. So sessile means what? Fixed at a position. Okay, understood about this habit and habitat? Yes, Sana, give me a reply. Understood or not? अभी आप क्या बोल रही हैं? Okay, so you were not listening. See, I was explaining the first characteristic of this Porifera. Porifera का habit और habitat means वो कहाँ रहते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. ठीक, so they are all aquatic. जितने भी Porifera के organism हैं, each and every one of them are aquatic. They are found only in watery areas. अब aquatic में भी क्या हो गया? Marine और fresh water. So 90% of the organism are found in what? Marine areas, and only few of them are found in what? Freshwater areas. Okay, अब उनका हैबिट कैसा है? वो लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं. मीन्स दे डू नॉट हैव
the ability to move. They are attached to a substratum, whether it is rock or ground or any twig. Okay, so sessile is the word for fixed at a position. We will say कि most of the poriferans are aquatic and they are sessile. Okay, now understood? Yes, ma'am. Okay. Now second point is what? Level of organization. This I have already explained. What is the level of organization of poriferans? Come on, quickly try to remember. I have told you, na, there are what? Four kind of level of organizations: cellular, tissue, organ system. So in which category does this porifera belongs? Cellular. Yes, because it is the most primitive one. Cellular level of organization. Okay. Now the third characteristic will be what? Germ layer. See, in the same sequence we are moving, which we have studied earlier. जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था उसी सीक्वेंस में हम लोग मूव कर रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए. सो जर्म लेयर. अब for this germ layer, some say that they are diploblastic, means two germ layer. But और जगह और लोगों में dispute है इस बात का कि since they are having cellular level, so उस वजह से लेवल मीन्स कि जो जर्म लेयर है उसका फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया है एंड दैट इज वाई सम scientists or some people also say that they do not have any germ layer. So 80 to 85% say most of them are having diploblastic layer, means that ectoderm and endoderm. So I'm going to write that only. And in exam you will also write that they are diploblastic because in NCRT and in all in one book and in many other books like SGAN and KP other books. So everything where it is written that this their germ layer is diploblastic. So you will write diploblastic and not diploblastic. Diploblastic means they will have only what? Two germ layer, ectoderm and endoderm. Now the fourth characteristic will be what? After studying the germ layer, we will see body wall. Body wall. Now they are having what? Cellular level of organization. तो इनका body wall क्या होगा? बहुत ही कमजोर होगा. But still they are having three different kind of layers in their body. So they are having what? Outer layer. Then they are having inner layer, and then the middle layer. Middle. It is somewhat jelly-like structure. So gel structure. So इसके outer layer को हम लोग क्या कहते हैं? The outer layer is known as pinacoderm. Pinacoderm. Okay? और ये कौन सा सेल कंटेन करता है? Pinacocytes. And ये inner layer, this layer is important. Okay? तो इस layer में क्या है? Inner layer is formed of coanoderm. ये टर्म याद रखना, coanoderm. Okay? एंड कोएनोडर्म का सेल क्या हो जाएगा? कोएनोसाइट्स. ठीक. सो आउटर लेयर एक उनकी बॉडी का, फिर दूसरा इनर लेयर है जिसको हम लोग कोएनोडर्म बोल रहे हैं यानी कि कोएनोसाइट्स. देन एक और मिडिल जेली लाइक स्ट्रक्चर है एंड दिस जेली लाइक स्ट्रक्चर इज very famous for its totipotent ability, phagocytic ability, chromocytes. मतलब इस जेली लाइक स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं. ठीक. और ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल है 6 या 7 तरीके के, ये लोग हर अलग अलग चीज में पार्टिसिपेट करते हैं. मीन्स दे आर हैविंग स्क्लेरोब्लास्ट, दे आर हैविंग ट्रोफोब्लास्ट, दे आर हैविंग अमीबोसाइट्स. सम आर फैगोसिटिक की बीमारी को दूर रखे. कुछ लोग स्केलेटल सिस्टम बनाने में मदद करते हैं. कुछ लोग टॉटिपोटेंट सेल्स, मतलब कुछ सेल्स टॉटिपोटेंट होते हैं, मीन्स कि उनके पास एबिलिटी होती है एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनाने का. ओके. सो इतना डीपली नहीं पूछेगा इन एग्जाम, बट आई एम गोइंग टू राइट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस. ओके. सो द मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? mesenchyme. Mesenchyme. And this mesenchyme contains many cells, have many cells in them. कौन से cells होंगे? We will write one by one. First cell will be scleroblast. Second cell will be trophoblast. Then schizocytes, then phagocytes, then archaeocytes, then chromocytes, and at last myocytes. Out of these, you just have to remember this scleroblast one and this archaeocytes one.
and rest if you will not remember the rest, there is no problem. So these scleroblasts are very important for you to remember, as these help in skeletal formation. Skeletal फॉर्मेशन, ये सेल्स क्या करती हैं, इस पॉलीफेरा के स्केलेटल सिस्टम को बनाने में मदद करती हैं. एंड देन दिस ट्रोफोब्लास्ट इज हेल्पफुल इन व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Then this thizocyte, food storage. Phagocytes engulf pathogens. Then archaeocytes are totipotent cells. Do you know totipotent meaning, Sana? What is the meaning of totipotent? No, ma'am. Okay. These are pigmented cells and these are contractile cells. Contractile cells around the osculum. So let me write here what are totipotent cells. Totipotent. So ऐसे cells, those cells which are having the ability to form a whole new organism from single or a group of cell, those cells are called as totipotent cell. जितने भी सिंगल या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनके पास एबिलिटी है कि एक ऑर्गेनिज्म मींस एक फ्यू ऑफ द सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकें, दो सेल्स आर कॉल्ड एज टॉटिपोटेंट सेल. So these archaeocytes which are present in the cells of mesenchyme, these archaeocytes are what? Totipotent cells. मीन्स अगर फ्रेगमेंटेशन में या बडिंग में या किसी और चीज में इस पॉलीफेरा का कोई पार्ट टूट के वाटर बॉडी में गिरता है, so those parts will be able to form a whole new porifera. Okay, understood now? Yes, ma'am. Yes, cells having the ability to form whole new organisms. Now we will move to the next characteristic after the body wall. It is related to body wall only. Body forms means उनकी कितनी body forms पाए जा सकते हैं. So it is only for your knowledge and nothing important is in this. Ascon type, then Sycon type, and then ल्यूकॉन टाइप. ये एस्कॉन क्या होता है, सबसे सिंपल होता है बॉडी स्ट्रक्चर, एंड यहाँ से क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है. मीन्स ल्यूकॉन इज द कॉम्प्लेक्स वन. लेट मी शो यू विद द फिगर. सो इफ यू आर एबल टू सी दिस फिगर, दिस वन इज व्हाट मोस्ट सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनी पोरिफेरा. सो ये एस्कॉन टाइप है, दिस वन इज साइकॉन टाइप. सी you can see the complexity is increasing, and this one is glucon type. So these three body forms can be seen in any of the porifera phylums and any of the organism of porifera. Okay, now next point is about after body wall what we have studied. Segmentation. Just na segmentation or coelom or notochord. Okay, let me write every serial wise. So first let me write segmentation, then coelom, then what, symmetry, then notochord. All these we have seen na in classification basis. So is segmentation present in this whole poriferans? Figure भी देख लो, segmentation present है poriferans में. You can see the from a figure. Is any segmentation is present in them? Yes or no? Absent or present? You just have to say this much. Okay, you can type it also. So segmentation is absent. Coelom, they are acoelomate. एसिलोमेट, क्योंकि बॉडी वॉल ही क्या है, जर्म लेयर में दो ही जर्म लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक, दैट इज व्हाई दे आर एसिलोमेट. सिमेट्री, मोस्टली क्या होता है, एसिमेट्रिकल. मोस्टली एसिमेट्रिकल. ओनली few are radially symmetrical, and that too very less radially symmetrical. Okay, notochord, of course notochord is absent. So these are what basic characteristics of phylum porifera. One more important point, you mark it as important note. This question has been asked many times in exam also. So body wall, I will show you from the figure also. Body wall of the sponges encloses a large central cavity, and that large central cavity is what, spongocoel or paragastric cavity. Okay, so from the figure let me show you. ये जो central cavity दिख रही है ना,
दिस होल कैविटी, दिस कैविटी इज व्हाट? स्पॉन्जोसील. जो इतना पूरा जगह खाली है, दिस होल कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी. इसी कैविटी में वाटर कैनाल मीन्स वाटर फ्लो होता है पूरी बॉडी में, एंड इसी वाटर फ्लो के थ्रू पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ फूड, ये सारी चीजें क्या होती है? इसी स्पॉन्जोसील कैविटी में होंगी. ओके, so this point you have to remember about spongocoel. Body wall of sponges which are enclosing a large central cavity. उसी cavity में क्या हो रहा है? water flow होगा through the pores, and उसी water flow में यानी कि उसी water canal system के through respiration, nutrition and food का transportation होगा. Okay, now we will see and try to understand from the figure. I have drawn it earlier. So in the figure, this one right now I've explained na outer layer. So this one is what? Outer layer. ये outer layer क्या है? Pinacoderm है. This outer layer is what? Pinacoderm. And जो ये inside वाली layer है, this inside layer is what? It is choanoderm. ठीक? And in between these two, outside and inside layer, देखो gap present है. ये gap जो है, this gap, इस gap को हम लोग क्या बोलते हैं? Ostia. What are we calling these gap? Ostia. See, इन दोनों के बीच में एक गैप प्रेजेंट रहेगा और इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टिया. ठीक, इसी ऑस्टिया के थ्रू सी पूरे बॉडी में इसकी क्या है? ऑस्टिया मतलब छोटे 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 पोर्स हैं, और दोज पोर्स एंड टाइनी होल पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया. These ostia, through these ostia only water will enter into the body of these poriferans. इसी ऑस्टिया के थ्रू हर उसमें वाटर इंटर करेगा इनटू वेयर? इनटू द लार्ज कैविटी विच इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जोसील जो अभी कैविटी थी, लार्ज कैविटी, उसमें जाएगा वाया ऑस्टिया. ऑस्टिया के थ्रू ही वाटर इंटर करता है पॉरीफेरा के बॉडी में. ओके, हैव यू अंडरस्टूड अबाउट दिस मच कि व्हाट डज दिस ऑस्टिया डू? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्टिया? See, ostia are tiny pores and that are many in numbers in poriferan bodies. And with the help of ostia only, water is getting transported into this cavity of sponges. Okay, and this cavity is called as what? Spongocoel. So this term, and this term you must remember. That what is spongocoel, what is choanoderm? Choanoderm is inside or the inner lining of porifera, and choanoderms produce choanocyte, means they are having cells which are called as choanocytes, and these are collar cells. They are having flagella. See, green वाला जितना भी structure है, these greeny structures, these are what? Flagella. अब flagella क्या करते हैं? Beating of water. वाटर को बीट करते हैं सो दैट दिस वाटर कैन रेगुलेट और सर्कुलेट इन द होल बॉडी ऑफ पॉरीफेरेंस. ये फ्लेजिला अपनी विप्लैश मूवमेंट, मतलब आगे पीछे ऐसे ऐसे मूवमेंट से वाटर को क्या करते हैं? मूव कराते हैं पूरे पॉरीफेरा की बॉडी में. लास्ट पॉइंट, इट इज द सिंगल ओपनिंग. इस सिंगल ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम. इस सिंगल ओपनिंग को हम लोग बोल रहे हैं ऑस्कुलम. एंड ऑस्कुलम का वर्क क्या है? टेकिंग एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी. ठीक, जितना भी चीज है मीन्स मेनली वाटर एंड द फूड एंड द अनवांटेड पार्टिकल, दीज आर able to move outside from this osculum also and from this pores also. So mainly क्या होता है? इस osculum के through water का transport, and inside the water जितने excretory product रहेंगे, digestive products रहेंगे, whatever the nutritive products are there, so those will also come and move outside through this single opening also. So osculum or ostia में don't get confused. Ostia are many tiny pores and osculum is single opening. Okay, so single opening you can also say कि mouth है ये. Osculum is compared to as mouth. Okay, so have you understood about their body structure? How is their body structure divided? Only a simple structure is there, or should I explain once again? No, I understood that. Okay, so again we will see an important system. Important note के अंदर ही you will see the poriferans have a special system. और उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम.
वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या करता है? राइट नाउ आई एक्सप्लेन कि वाटर इंटर करता है, फिर वाटर के थ्रू ही क्या हो रहा है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन भी हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जो वाटर बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, सिंस ये एक जगह पे अटैच्ड है अपने सबस्ट्रेटम पे, और लेटर यू विल सी कि ये क्या है? यूनिसेक्सुअल, सॉरी बाइसेक्सुअल है, मींस कि ये लोग हर्माफ्रोडाइट या मोनोइशियस कुछ भी कह लो, एक ही बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। सो one porifera is ready means ki in one porifera their male part is ready but female is not, female reproductive part is not grown. In another porifera which is somewhere in the aquatic areas, so उनके में क्या होगा? उनमें मेल नहीं डेवलप है but female has developed. So this male through water only will enter into the body of this porifera and fuse with this female, and this also is done with the help of what? Water canal system. So they are having what? Water canal system which helps in one first nutrition, क्योंकि water के साथ ही जितने भी nutritive items हैं inside present aquatic environment, that also go in the body of poriferans. Then they help in digestion also, then they help in excretion also. जितने भी पॉरीफेरा के अनवांटेड पार्टिकल्स रहेंगे वो पानी में जाके मिल जाएंगे, and that water will move out from the body into the aquatic bodies. Excretion. Now fourth, they also help in what? Reproduction. सो ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका? पॉरीफेरेंस का, बिकॉज थ्रू दिस वाटर कैनाल सिस्टम ओनली ये पॉरीफेरेंस आर एबल टू गेट देयर न्यूट्रिशन, दे आर एबल टू गेट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटेड, एक्सक्रीशन उन लोग का हो पाता है, एंड एट द सेम टाइम रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. ओके, understood about what is their water vascular system या water canal system. Sorry, vascular system is found in some other phylum. Water canal system, let me explain once again with this figure T. It is the body of porifera. So basic water canal system is what? यहाँ aquatic environment में जितने भी water हैं they will move inside the body of poriferans via what? Ostia. Via ostia. फिर ऑस्टिया के थ्रू जब ये स्पॉन्जोसील कैविटी मारे, ये क्या है? स्पॉन्जोसील कैविटी. ओके, रिटन रॉन्ग. स्पॉन्जोसील कैविटी. अब इस कैविटी में ही क्या होगा? इस जो सेल का एक्सक्रीटरी पार्ट रहेगा वो मूव आउट हो जाएगा, सेल का जो न्यूट्रिटिव पार्ट रहेगा वो सेल क्या करेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा. एंड एट द सेम टाइम अगर इसमें कोई रिप्रोडक्टिव या मेल या फीमेल पार्ट आई है, मींस मेल फीमेल पार्ट नॉट मींस कि इसका कोई एग या ओवम आया है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? वाटर बॉडीज के थ्रू ही इस पॉरीफेरा के अंदर चला जाएगा, मींस वाटर करंट के थ्रू ही इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, एंड देन दे विल फ्यूज एंड फर्टिलाइज एंड दे विल फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड इस वाटर करंट के थ्रू ही क्या हो जाएगा? वो भी जो जाइगोट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? बाहर आ सकता है. ओके, सो इन दैट वे इट कैन फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म attaching to the substratum. So all the work is done by this only water canal system. ये ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर जा रहा है और इसी पानी में क्या हो रहा है? खाना भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स भी हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, और इसी पानी के थ्रू जो एक्सक्रीशन है इस पॉरीफेरा के बॉडी का वो भी क्या हो रहा है? ऑस्कुलम के थ्रू बाहर वाटर करंट में साथ में चला जाता है. ओके, अंडरस्टूड अबाउट दिस मच. Phylum Porifera. Any doubt up to here? No, ma'am. So now we will take the other characteristics, means other physiology. Other physiology like digestion, respiration, circulation, fertilization, all these things. Physiology. So first we will take digestion. So their digestion is what? Intracellular. Digestion is intracellular, but whole digestive system क्या है? Absent है. Digestive system absent है, लेकिन जो digestion होता है वो क्या है? Intracellular. अब do you know about intracellular and extracellular digestion? No, ma'am. So digestion दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रा, एक होगा एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा like our body and intra primitive one.
सो इंट्रा में क्या होगा, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, लाइक दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे ही फूड एंट्री किया बॉडी में, सो उस बॉडी के सेल्स, यहाँ सेल्स के अंदर फूड एंट्री करेगा और यही सेल्स रिलीज करेंगे enzymes within this cells only. So enzymes and everything are released by the cell in the cell only. और जो फूड भी है वो भी कहाँ ऑब्जॉर्व हो रहा है, इन द सेल्स. तो ये क्या हो गया, इंट्रासेलुलर. ओके, नाउ in our body if we see, this is the figure of our stomach, somewhat like this. So ये stomach के cells हैं. अब in our body what happens, we take food outside the cells and ये cell क्या करते हैं, they release their enzymes outside their cells और इन cells के बाहर इस enzyme के थ्रू इस food का absorption होता है. Means it is happening outside their intercells. ये cells के बाहर हो रहा है, that is why it is extracellular digestion. और ये cells के अंदर ही food का absorption हो रहा है, that is why it is called as intracellular cell या intracellular digestion. Now I think you have understood. Okay, understood now what is intracellular and extracellular digestion? extra extra. Okay, so ये अच्छे से समझ लेना because this term will be continued till we study chordata. See once again, take this figure as a human stomach. So human stomach में cells रहेंगे in line ऐसे, and if you are taking food, so food का formation यहाँ stomach में आके हमारा food टिकते हैं. Now what happens, इस food को digest करने के लिए, यानी कि इस food के material को absorb करने के लिए, इसके nutrient को लेने के लिए, what does these cells do? These cells release their enzyme into this area here, and in this area only, इस area में ही क्या होगा, पूरा एंजाइम इस फूड के ऊपर एक्ट करेगा एंड दिस फूड का न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा. सो ये कैसे हो रहा है, बाय द रिलीज ऑफ देयर एंजाइम आउटसाइड देयर सेल्स. कहाँ पे, सेल्स के बाहर. सी देखो, अपने सेल्स के बाहर यहाँ पे ये लोग एंजाइम्स को निकाल रहे हैं, बट हियर वी कैन सी कि जो फूड है वो सेल्स के अंदर ही है और वो लोग एंजाइम भी जो निकाल रहे हैं वो सेल्स के अंदर ही निकाल रहे हैं, और फूड जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी सेल के अंदर ही एब्जॉर्ब हो रहा है. दैट इज व्हाई इट इज इंट्रा वन एंड इट इज एक्स्ट्रा वन. अब समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन? Yes, ma'am. Okay, keep this one in mind because it will continue till we study the chordata and their features. So now we will take respiration. Throughout हमने देखा कि respiration present था. Yes या ना, respiration present था? No, ma'am. Yes, respiratory system is absent. However, respiration is done through what? General body surface. Respiration is done through this water canal system भी कह लो, ठीक, general body surface. मीन जहाँ पे अटैच है वो उधर ही वाटर एरिया के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. Then next we can take excretion. Just now we have explained also about excretion. Excretory system present है? नहीं. But excretion कैसे हो रहा है? Excretion through this general body surface, or you can say water canal system. General body surface. Now next feature, circulation. Have you seen any circulation going on here? Any circulatory system? Yes or no? Any circulatory system have you seen in this poriferans? Ma'am, water. Circulation water का होता है? Ma'am, आप ही तो बोली transport होता है ना water. हाँ, तो transport और circulate, these are two different things. So circulatory system is completely absent. Circulatory system is absent. Transport of water and transport of food occurs. So वही जो food और water है वो water canal में circulate करता है. That's what I said. Okay. Circulatory system is absent. You can write here although circulation of food, and next one is what? Circulation excretion. We can say skeletal system. So skeletal system, they are having their skeletal system. Means उनके पास क्या है? Skeletal system present है. Skeletal system internally present है. Right? Just now I will show you from the figure. Internally present. जैसे हमारे बॉडी में क्या है? Our skeletal system
can be shown from the outside, like this finger, nose, eyes, ears, everything we can see from by looking at the organism. But here their skeletal system is present internally. Okay, and these internal skeletal system have spicules and also have spongin fibers. So ये spicules और spongin fibers ही मिलके क्या करते हैं, poriferans का skeletal system बनाते हैं. अब based on this spicules also ना, these poriferans have been divided into classes. So we don't have to go into that much deep. You can just write कि calcareous spicules भी हो सकते हैं and silicaceous भी हो सकते हैं. Silicaceous. So these two, spongins and spongin fiber, they form together what, skeletal system. Now let me show you from the figure also. Yes. See ये जो okay, ये देखो spicules है ना, ये spicules कहाँ है, बॉडी के इनसाइड में है. इनसाइड वेयर, दिस लेयर इन द कोएनोडर्म लेयर. ये जो इनसाइड लेयर है कोएनोडर्म का, इन दिस लेयर सम स्पिक्यूल्स एंड सम दिस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. और यही स्पिक्यूल्स और यही फाइबर स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, पूरा एक स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. ओके, सी ये स्पिक्यूल्स है, ये स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, ये स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं, दिस स्पॉन्जिन फाइबर्स. सो ये स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर मिलके पॉरीफेरेंस की बॉडी को फॉर्म करते हैं. ओके, नेक्स्ट after skeletal system, what we can see, what others are left, skeletal system, nervous system, sensory system, yes. So nervous system is, it's been seen or not, absent, absent. इसमें कुछ भी नहीं है basically. This one is easy to remember कि ये primitive one है and they are not having anything advanced system. Then sensory system, वो भी absent है. जब नर्वस सिस्टम ही नहीं है तो सेंसरी सिस्टम क्या होगा, दे डोंट हैव एनी. देन नेक्स्ट reproduction. So they are having two kind of reproduction. What are those two kinds? You can tell me, Sana. asexual and vegetative. Asexual and sexual. Here vegetative will not be seen. Vegetative in the vegetables only, not here. Plant kingdom show vegetatives. Here we will see asexual and sexual only. Asexual and sexual. अब asexual में कितने तरह से हो जाएगा, एक fragmentation एंड दूसरा budding. एंड budding कैसे होगा, वो जो totipotent cell we have studied ना, those totipotent cell will be responsible for this budding process. Totipotent cells. Fragmentation, you know, any body part will fall apart. जैसे ये पॉरीफेरा है, इसका कोई भी हल्का सा बॉडी पार्ट विल फॉल अपार्ट एंड दिस बॉडी पार्ट विल फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड दिस बडिंग आल्सो इंटरनली, इनमें क्या होता है, इंटरनल बडिंग देखी जाती है. मींस कि जैसे ये पॉरीफेरा है, यहाँ इंटरनली सम काइंड ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स आर डेवलप्ड और स्मॉल ब्लिस्टर्स कैन बी डेवलप्ड, सीन डेवलपिंग. और फिर ये टोटिपोटेंट सेल उस ब्लिस्टर्स पे एक्ट करते हैं एंड दीज सेल्स कैन रप्चर आउट ऑफ द ओरिजिनल पॉरीफेरन बॉडी और वो एक नए फॉर्म में बन जाते हैं. वी हैव सीन इन प्लांट्स की यहाँ पे क्या होता है, प्लांट का कोई एक्स्ट्रा पार्ट उभरा हुआ है एंड वो गिरता है, उसको हम लोग बडिंग बोलते हैं. बट इन दिस इनसाइड द बॉडी ऑफ पॉरीफेरन सम सेल्स विल गेट टुगेदर, मींस बेसिकली टोटिपोटेंट सेल, वो लोग अपने आप को पॉरीफेरन की बॉडी से बाहर रप्चर करेंगे एंड देन दे विल फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. नाउ सेक्सुअल वन इज वेरी इजी एंड वी ऑल नो व्हाट इज सेक्सुअल वन. Fusion, male and female gamete will be there and they will what, fuse and then will fertilization will occur. So up to here we will write, and in the reproduction part only we can write ki poriferans are monoecious. Monoecious mostly are used for plant kingdom, or we can say hermaphrodite or bisexual, means male and female organism will both be present in one organism. Okay, एक ही organism में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा. Now next part is our fertilization. So इनका fertilization कैसे है, I've told you about two types, internal and external. So their internal fertilization है via water currents and plus they are having cross fertilization.
नाउ मीन्स क्रॉस इज व्हाट, रिमेम्बर दिस कि एक का क्या है मेल डेवलप हो गया है, दूसरे का क्या है फीमेल डेवलप हुआ है। मीन्स एक ये पॉलीफेरा है, एक ये पॉलीफेरा है, बट इसमें क्या है, इसका फीमेल डेवलप है और इसका मेल डेवलप हुआ है। तो थ्रू वाटर करेंट्स दिस मेल गैमीट विल फ्यूज विद दिस फीमेल गैमीट। सो टू पॉलीफेरेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, टू पॉलीफेरेंस आर इन्वॉल्व, एंड दैट इज वाई ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग कह रहे हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, अंडरस्टूड? व्हाई आर वी? Yes, ma'am. यस, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, अब जब वो फर्टिलाइजेशन हो गया, क्रॉस हो गया, फ्यूजन हो गया, वो डेवलप कैसे करते हैं? सो देयर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, indirect development. Okay, so two kind of development will be there, direct and indirect. Direct mostly कि नया जो ऑर्गेनिज्म है वो वैसा का वैसा ही बनेगा, और इनडायरेक्ट मतलब कि वो ग्रो करेगा, then they will resemble their parents in their structure and similarity. Okay, animals mostly will show indirect, some animals will show only direct one. Okay, so what are left? Examples. So see, there are many examples. So what examples I am writing, try to remember those, because they are mostly important and most of these examples have been only asked in exams. So जो मेरा लिखा हुआ है, try to remember that one first. So only 3 examples I will write. The first one is, and also one more point here, you have to remember scientific name also and the common name also. मतलब तुम्हें दोनों याद ही करना है, कभी कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछेगा, कभी साइंटिफिक नेम से, तो यू हैव टू रिमेम्बर. सो फर्स्ट एग्जांपल इज साइकॉन एंड इसका कॉमन नेम है साइफा. देन सेकेंड एग्जांपल इज यू स्पॉन्जियम एंड कॉमन नेम इज बाथ स्पॉन्ज, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एक स्पॉन्ज की तरह, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज बाथ स्पॉन्ज. स्पॉन्जिला, ये क्या है, फ्रेश वाटर sponge. These are found in fresh water, that is why they are called as fresh water sponge. So mostly बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों में गलती कर देते हैं, इन दोनों के साइंटिफिक नेम्स कॉमन नेम्स में. यू स्पॉन्जिया को बाथ फ्रेश वाटर बोल देंगे एंड स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज. सो यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दिस कि you take bath daily, so you means bath sponge, and then spongilla will always be fresh water one. Okay, spongilla, you okay. So now we will move to the slide. I have explained everything. Now this slide will contain what I have written here. So have you explained my points, each and every one? तुम्हें बस सीक्वेंस याद रखना है. रिमेंबर दिस मच, यू हैव टू रिमेंबर योर सीक्वेंस कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 6 या 7 सीक्वेंस है वो, एंड अदर जो फिजियोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और सर्कुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सब. अगर तुम वो सीक्वेंस याद रख ली, तो देन यू विल बी एबल टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एवरी फाइलम, क्योंकि हम इसी सीक्वेंस में हर फाइलम को स्टडी करेंगे. ओके सना? सो yes, in next class I will ask you the sequence, in which sequence we have started this phylum Porifera. So this phylum Porifera includes what? First and most primitive group of multicellular animals. They are referred to as poriferans, means pore bearing animals. They are primitive, multicellular and are commonly called sponges. कॉमन नेम क्या है? स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मल जो घर में हम लोग स्पॉन्जेस यूज करते हैं, दोज स्पॉन्जेस आर व्हाट, लाइक दिस ओनली. पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, खुशी होते हैं. तो सेम फिगर इज लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर देयर जनरल फीचर्स? सो हैबिटेट में मोस्टली मरीन, सम आर फ्रेश वाटर एंड फाउंड इन लेक्स. Example C, spongilla is found in what? Fresh water. Then next you can say shape and size. Size of sponges ranges from 1 centimeter to 1 meter. Not at all important. कभी कहीं नहीं पूछता. Some of them have vase-like cylindrical shape and majority have irregular shape. Next, symmetry. Symmetry में some show like cycon show radial symmetry, while sponges showing irregular shape and have no symmetry. Is asymmetrical, mostly asymmetrical ही होते हैं. Body wall contains outer dermal layer or pinacoderm, inner gastral layer और coanoderm. Pinacoderm contain flat cells जिसको हम लोग pinacocytes बोलते हैं. Coanoderm consists of spherical cells और collar cells जो flagellum contain करता है, which emerges out, hence they are also called as flagellated cells or collar cells. Now in this figure also you can see inside the body, ये पोरिफेरा का बॉडी है और ये क्या है? ये सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट है उसका. ये क्या है? सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट है.
अब इनकी बॉडी में क्या है, ये जो आउटर लेयर है ये एपोपाइल पूरी बॉडी को एक साथ लेके बोल रहा है. सो दिस इनर लेयर इज कॉल्ड क्वानोसाइट. दिस इनर लेयर, ये ब्लू वाला, और इसी इनर लेयर के अंदर क्या है, सॉरी दिस, ये ब्लू वाले के बाद वाला लेयर को क्वानोसाइट बोल रहा है, और इसी क्वानोसाइट के अंदर क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो कि विप्लैश मूवमेंट करते हैं पानी के अच्छे मूवमेंट के लिए. नाउ यहाँ पे इन बिटवीन दोज ऑस्टिया प्रेजेंट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और ये क्या है, माउथ का काम करता है, जो कि क्या है, ऑस्कुलम. ये वाली लेयर जो है ना, ये है पिनेकोडर्म. पिनेकोडर्म, ये ब्लू वाला. ठीक. नाउ body organization means sponges show cellular level of organization, and they are almost independent, that is cooperating very little with one another. अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल भी नहीं है. ईच सेल इज हैविंग परफॉर्मिंग देयर ओन फंक्शन सेपरेटली. यहाँ किसी भी सेल का किसी अदर सेल से कोई लेना देना नहीं है. Then germ layer, two germ layers are present, that is they are diploblastic. Now body cavity, sponges have large cavity which is spongocoel or paragastric cavity. Important point. Okay, this question has been asked many times, so remember. Skeletal internal है and includes inorganic spicules or spongy fibers. Canal system is one of the important features. Water canal system, it is one of the important features of sponges. Canal system is network of channels called canals which connect spongocoel to the outside through ostia. Means ostia के through water enter करता है body में और कहाँ आके ठहरता है, this spongocoel cavity. The canals are lined by choanocytes. It maintains a constant flow of water from ostia to osculum through spongocoel. अब जब कैनाल के अंदर मीन्स स्पॉन्जोसील के अंदर आ गया तो जो फ्लैजिलम है, जो क्वानोसाइट्स को साथ अटैच्ड हैं, वो फ्लैजिलम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली विप्लैश मूवमेंट करते रहते हैं ताकि वाटर पूरे स्पॉन्जोसील में सर्कुलर मोशन में मूव कर सके. Then digestion in animals of this phylum is intracellular, means inside the cells in nature. Circulation, amoeboid cell transport food from ingesting cells to other cells. Means रियल ब्लड सर्कुलेशन वाला सिस्टम तो नहीं प्रेजेंट है, बट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज गोइंग ऑन एंड ऑल्सो ऑफ वाटर. देन respiration, it occurs through general body surface by diffusion. Excretion also occurs through body surface by diffusion. Excretory product है ये अमोनिया. अमोनिया इज व्हाट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. जितने भी एक्वेटिक फॉर्म्स होंगे उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया ही होगा. Then reproduction, sensory system. Sponges lack sensory system and nerve cells. So they are poor in response to stimuli. ये उनके पास नर्वस सिस्टम ही नहीं है, सेंसरी सिस्टम भी नहीं है. So they don't respond much to the outside stimuli. Then reproduction में क्या है, reproduce both asexually and sexually. Asexual by budding and sexually by fusion of ova and spermatozoa. Then fertilization is internal. Sperm of one sponge are carried by water current to the ova of another. Means body के अंदर fertilization हो रहा है तो इसलिए internal. Development is mostly indirect with larval stages called parenchyma and amphiblastula. ये not at all important. ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा. Now coming to the examples. What are the examples? Now I have told you about this Saifa or Saicon. Most important to learn. Then spongilla or freshwater sponge. Okay, this is not working. This one, this is also not working. Let me see. Then spongilla one and one more spongium, glass water sponge. Use spongia here. It is not written. Bath sponge. Okay, these three you try to remember, and despite of these three, if you wish, you can remember many other example. If you don't, no problem. But this Saifa and Spongilla and Euspongia, these three are most important. कुछ एक्स्ट्रा अगर याद करना होगा तो यूप्लेक्टेला यू कैन राइट. वीनस फ्लावर बास्केट इन जापान, पीपल प्रेजेंट दिस एज अ गिफ्ट इन अ वेडिंग. मीन्स ये फ्लावर बास्केट की तरह एक वेडिंग में इसको गिफ्ट की तरह भी प्रेफर करते हैं देना. सो यूप्लेक्टेला इफ यू वांट यू कैन, otherwise these three are enough. Now this is the NCERT figure also of these three, Siphon, Spongia and Spongilla. NCERT में भी यही तीनों का जिक्र है. Now I think I have covered everything. Yes.
So this phylum is completed. Are you having any doubt in understanding any of the question or any of the point? No, ma'am. Okay. So most important, all and all, we can say कि इनका cellular level organization है, digestive system absent है, circulatory system absent है, excretory system absent है, respiration absent है. Everything occurs through what? General body surface or via water current. ठीक, या water canal system. Most important things कि इनमें जो क्या है, spongocoel cavity है, कोएनोसाइट्स इनर लाइनिंग है, देन दे आर हैविंग ऑस्टिया, मेनी ऑस्टिया जिसके थ्रू वाटर इंटर करता है. अनदर इम्पोर्टेंट, वाटर कैनाल सिस्टम. So we will keep up the class this much only. I'm going to stop then.